We have put this together in close conversation with our mentors and fellowship consultants, Mary Therese Purkalang and Dr. Monisha Ahmad. So thank you both for bringing this platform together. And we're really seeing it as kind of a key forum to learn more about the region and to have the opportunity to converse with people who are doing exemplary work on issues related to the region around cultural practices, local knowledge systems, ecological questions. So to begin such a forum with Dr. Devy's talk feels very, very appropriate. His is really a lifetime of work as a cultural activist, a literary critic, an educator, institution builder. And his work and writings really give us an insight into a kind of macro civilizational view of history and of the world, while also providing very incisive readings and understandings into the local, the atomic, the specific that constitute our entanglements. Professor Devy is currently the director of the School of Civilization at the Somaiya Vidya Vihar University in Bombay. He has authored over 100 books on various subjects ranging from literature, linguistics, philosophy, education, anthropology, and history. He is the force behind the Adivasi Academy and the Bhasha Research and Publication Center, which are very exemplary institutions that have done incredible work around tribal communities. One being the very important People's Linguistic Survey of India, which started in 2010 and building on the kind of work that had been happening over the last 15 years before that. And this, as the website describes it, is a rights-based movement for nationwide survey to identify, document, and understand the state of living languages. And it was quite a incredible exercise because I think in a period of 4 years, PSLI had documented more than 700 languages, which included scheduled languages, tribal and nomadic languages, coastal languages, among others. The Himalayan region was also extensively covered in this survey, starting with Arunachal Pradesh and covering over 9 other states, which included Jammu and Kashmir, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Uttarakhand, etc. Last year, Dr. Devy brought out with Tony Joseph and Ravi Korisetar a very large project which came together as a book called The Indians, Histories of Civilization. And this is again a very mammoth project with a team of 100 historians looking at the past of the subcontinent. And so really thinking about this comprehensive history of world civilizations, which is something that he's working on. Today's talk is titled The Story of Language and the Language of Story. And this unique connection between what it means to be human and language is something that Dr. Devy has such a fine understanding of. And he will, through this talk, provide us this long arc of history to look at the evolution of languages and how and why language itself needs to be seen as a narrative of the universe. And in this talk, he will also talk about how every story creates its own universe. And in that sense, a unique language is a unique language for the purpose of that narrative. So I think this is something that we wanted him to also share with us, and I think would be really instructive for us to listen to. So I welcome you, Dr. Devy. Thank you for being with us. And thank you so much. May I say how absolutely honored I feel being with you this evening. And I want to thank the Foundation for Indian Contemporary Art and the Himalayan Fellowship Program for making it possible for me to meet all those who are present today, though online, yet meeting of at least a virtual kind is possible. Thank you so much. And good evening, everybody who's joined. I have chosen this rather strange title for the talk.
that is the story of language and the language of story. Because something is happening to the storytelling ability of humans, and something disturbing is happening to human languages as well. And I thought I would bring these two things together to throw some light on where we are and perhaps where we are headed, uh, at least in some near future, if not a very distant future. शायद आप में से कुछ लोगों को अंग्रेजी की दिक्कत होगी, इसलिए कभी कभी मैं हिंदी में बात करूं, तो आप उसे स्वीकार कीजिए। जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि भाषा या बोलना ये अपने शरीर का एक हिस्सा है। I was under the impression that language is an ability of the body, just as seeing is an ability of the body, smelling, listening is an ability of the body. Whenever I thought of language before my time, my elders always pointed out to some other language. For instance, I used to speak Gujarati and Marathi at home. And my elders said that both these languages have come from a mixture of Sanskrit and Prakrit. Whenever I asked them, what was there before Sanskrit and Prakrit? They did not have a very clear answer. Sometimes they used to say, well, Sanskrit is a Deva Bhasha, so gods have given it to us. At other times, they simply scolded me and asked me to shut up. When I went to my college and university, I was hoping that somebody will provide answer to this question. No, I'm in a lecture. When I went to college and university, I thought those texts and those professors would give an answer to my question. But I found that they did not have much of a clue as to how old human languages are and which is the earliest language. कभी कभी ये बात मैंने सुनी थी और वो धर्म ग्रंथों में थी कि सबसे आरंभ में एक ही भाषा थी, और जब इंसान ने भगवान के सामने कुछ गलती की, अपराध की, उसकी सजा के रूप में वो एक भाषा के अनेक टुकड़े हुए और असंख्य भाषाएं बनी. But I was not willing to believe in these stories because there was a clear understanding, a clear doubt in my mind about this method of explaining the origin of humans. And obviously, I was somewhat familiar with the theory of evolution and Darwin's writings. It was much later that I realized that the human ability to speak is not a biological gift. It is not an essential part of the human body, but it is a cultural acquisition. मेरे कहने का मतलब है कि जैसे इंसान प्राणी पैदा हुआ होगा जब भी बहुत पुराने समय, तो जैसे ही वो वानर में से नर बना, फ्रॉम मंकी टू मैन, तो एकदम बोलने लगा, ये संभव नहीं था, ये नहीं हुआ था. हुआ था ये कि जब होमो सैपियन, हमारे जैसे इंसान का आरंभ हुआ, तब शुरू में आवाज निकालने की प्रक्रिया तो वो कर सकता था, बल्कि none of the organs of speech, lips, teeth, tongue, throat, nose, none of these were made in order that humans speak.
But humans use these organs, they double tasked these organs to produce sounds. They gathered these sounds year after year, century after century, almost millennium after millennium, close to 20 lakh years. This hard work finally allowed humans to formulate at least one meaningful sentence. And it seems that happened roughly 70,000 years before our time. Because humans had to do so much work in order to earn the ability to speak, I am saying that it was a cultural acquisition and not a biological gift. बहुत कोशिश करके ये सब हुआ, लेकिन ये इंसान कैसे कर पाया और बाकी के जानवर ये क्यों नहीं करते? That question was there, and when I chased that question, I found for myself through the knowledge accumulated in various sciences, I found for myself that it is in the human brain that approximately 85 billion neurons work, and these neurons have a peculiar character जो दूसरे जानवरों में नहीं है, वो इंसान के दिमाग में है. और वो ये है कि साइंटिस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन एज रिकर्सिव ब्रेन. Recursive brain is the brain that can think but can also think about thought. Other animals too think. Other animal brains of other animal species help their bodies in controlling the bodies, in controlling the body movement, in keeping the balance, just as one part of the human brain also allows us to maintain our balance, not to lose our balance while walking or running. But other brains of other animal species do not have the recursive ability. That is, they do not have the ability to think about thinking. ये जो विचार के बारे में विचार, विचार से जुड़ा विचार, कल्पना से जुड़ी कल्पना, ध्वनि से जुड़ा ध्वनि, हमारे दिमाग के अंदर ध्वनि, this recursive ability of brain allowed humans to speak. और उसके बाद ये हुआ कि भाषा ही इंसान के लिए दुनिया समझने का एकमेव मार्ग बना. I will explain this a little bit. You see, if you go to philosophers and ask if your consciousness, आपका चित्त, जिसे आप कहते कि मैं हूं, I am me, I am myself, ये जो चित्त है, consciousness है, whether that consciousness is a kind of a blind belief or whether it really is there. This is a question that philosophy has not been able to answer effectively so far. Similarly, philosophers tell us that what surrounds us, मैं आँख से जो देख रहा हूँ पूरी दुनिया, या कान से सुन के समझ रहा हूँ पूरी दुनिया, जो मैं आकाश में, आसमान में तारे और चंद्र देखता हूँ वगैरह, whether they are really there. जैसे आप हिमालय देखते तो whether the highest peak of the Himalayas, you never have touched it, you never been there, but you believe that it is there. तो ये सब चीजें जो है, जिसे फिलोसफी में रियलिटी या वास्तव कहा जाता है, नॉट, दिस इज नॉट अबाउट ट्रूथ, और सत्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वास्तव या रियलिटी की बात कर रहा हूं. रियलिटी एंड ट्रूथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. So whether the reality surrounding us is actually there or it is our illusion, एक भ्रम about things being there. There are great philosophical doubts about both these things, whether consciousness exists and whether reality is what we actually see.
whether it is the same way that a tiger, a lion, an elephant sees all that reality, or it is differently seen by them. But one thing is sure, and that is between the consciousness and the external reality, the phenomenal reality, there is a bridge, a single bridge that humans have constructed. And that single bridge is language. भाषा हमें पूरी दुनिया को ग्रास्प करने का एक तरीका और एकमात्र एकमेव तरीका हमें देती है. हम भाषा के जरिए चीजों को नाम देते हैं. We provide descriptions of things, we name things, and therefore those things come into existence. Think of this. They do not exist if we won't name them. There are so many colors the eye grasps, but because those colors do not have names, we in the brain do not actually recollect those colors as those colors. ये भाषा हमारे हमारे पास आई उसे 70,000 years पहले की बात है. ये humans started speaking, and humans also weaponize language. उसका एक अस्त्र या शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने लगे. खास करके जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, छवि में हूँ, I am only virtually there, but I have a back, but I have not seen my back. Yet, because language has a term called back, I believe that the back is there. That is, we name things and we can see with the help of those names, even things which the eyes cannot see. The eyes cannot see. ये अन्य जानवरों के पास नहीं था. इस तरह की भाषा जो प्रेजेंट नहीं है, जो हाल में नहीं है, इस समय नहीं आपके सामने, उसको भी ये भाषा का नेमिंग जो तरीका है उसके जरिए आप पकड़ सकते थे. जैसे मैं भाषा में कह सकता हूँ, yesterday I had a very good cup of coffee. लेकिन आपको कोई शेर ये नहीं बोलेगा कि कल मैंने जो खाया था वो आज जो खा रहा हूँ उससे बहुत बेहतरीन था. बिकॉज दैट कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, those are not mental concepts for other species. Humans weaponize language, and they started, therefore, they were able to migrate long distances and still survive. And this migration produced small groups. Out of Africa, they started the Homo sapiens some 70,000 years before our time. And in about 15,000 years' time, they had spread to 3 continents. Much later, after another 20,000 years, they had reached another remaining 2 continents. और इस ढंग से अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अभी का अमेरिका और अभी का यूरोप, वहां ये प्राणी जाके पहुंचा था. And there in small groups, the language, जो भी भाषा लेके गए थे over a distance of thousands of years and thousands of kilometers, उसको अलग अलग स्वरूप मिले. Very small groups of 8 to 900 members of the species used to stay together. उसे anthropology में population knot कहते. Those population knots generated independent languages everywhere in the world. But these people pass through many long periods of intense cold. उसे आर्कियोलॉजी में ग्लेशियल कहा जाता है, इंटरग्लेशियल. कभी वार्म होता था, कभी ठंडा होता था. इस तरह से चलता रहा till humans developed civilization. They started doing agriculture. पहले तो शिकारी थे, hunter gatherers थे. उसके बाद वो nomadic pastoral बने, जो जानवर को अपना के कब्जे में रख के उसके सहाय से अपना खाना बनाना, then यानी फूड पैदा करना. later they turned to agriculture. फिर शहरें बनी. कुछ urban civilizations came up, they also collapsed, they went down.
इस तरह से बहुत कुछ चहल पहल, बहुत कुछ माइग्रेशंस, इधर से उधर जाना, ये चलता रहा. Finally, sometime say about 7,000 years before our time, humans invented one more way of recording language. उस समय हमारे पहले 7,000 साल तक केवल बोलना यही भाषा का रूप था. 7,000 साल पहले इजिप्ट में और उसके बाद मेसोपोटामिया में अक्कडियन नाम का एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, जो शायद इराक या ईरान के एरिया में रहा, या तो येमेन में रहा होगा. उसकी जगह का नक्की ठिकाना अभी लगा नहीं है. बट द अक्केडियन सिविलाइजेशन, दे डेवलप्ड राइटिंग. और ये लिखते थे जो भी मटेरियल, कभी पत्थर पे लिखा, कभी लकड़ी का जो ट्री बार्क निकाल के लिखा. But they were able to write. Initially, writing started as arithmetical exercise, recording of numbers, recording of memories. लेकिन धीरे धीरे भाषा का एक लिखित स्वरूप बनने लगा. In India, we acquired writing skills only 3rd or 4th century before Christ, much later than other Asian countries, Western Asian countries had acquired that. As soon as writing came up, language changed its form. Writing was a reflection. Writing was an image of language. It was a kind of mirror image of language. But it produced new traditions of remembering language. तब से फिर ओरल ट्रेडिशंस भी बहुत जबरदस्त बनी, जिसमें कविताएं रची गई, तो कविता याद रखना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना, ये काम शुरू हुआ. पुराने समय का जो बोला गया था या सोचा गया था, वो रिकॉर्ड होने लगा. This kind of new form of language, not spoken language, but non-spoken language, continued along with spoken language. Essentially speech, but writing also became another form of language. हमारे समय के पहले, लगभग अपने देश की बात करें तो 900 साल पहले हमारे यहाँ पेपर का इस्तेमाल होने लगा. चीन में हमारे बहुत पहले पेपर का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ 11वीं सदी से पेपर का, कागज का इस्तेमाल होने लगा. और जैसे ही कागज का इस्तेमाल होने लगा, तो ये जो ओरल लिटरेचर था, या तो जो रिटर्न था लेकिन बहुत बहुत संक्षिप्त में होता था, सूत्र रूप में होता था, या तो बहुत कम मात्रा में लिखा जाता था, वो ज्यादा मात्रा में लिखा जाना शुरू हुआ. All of you know that medieval India from 11th century till the 18th century produced a large number of very powerful poets. In Karnataka, there was Basveshwar. In Maharashtra, and who wrote, and his followers wrote hundreds of songs. In Maharashtra, we had Mukunda Raja, Jnaneshwar, Eknath, Tukaram. Similarly, in Gujarat, in Rajasthan, there was Mirabai. There was, of course, Tulsi Ramayan in what is now the UP. Then there was Gita Govinda in Bengal and Orissa, border lines of languages. Shankar Dev in Assam, everywhere, and hundreds of books were written: history books, poetry books, prose books in Persian, Arabic, much later even in Urdu. So many languages started, and Tamil had a very rich tradition of oral tradition, and Tamil also had a more powerful written tradition of literature much earlier than all other languages. ये सब 19th century तक चला. जब पेपर आया तो बड़ी बड़ी कविताएं लिखी गई,
जो ओरल था उसे डॉक्यूमेंट किया गया, जैसे रामायण और महाभारत ओरल ट्रेडिशन में थे तो उनको लिखा गया, उनके अनुवाद किए गए. And then once the paper era ended and printing started in the 19th century, for India printing starts in the 19th century, balki there was an accidental machine, printing machine had reached Goa earlier, but it did not function for a very long time. Towards the end of the 18th century and early 19th century, printing hit India. जैसी प्रिंट टेक्नोलॉजी आई तो आपको पता होगा कि हमारी भाषाओं में, जिसे हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कहते हैं, सैकड़ों की संख्याओं में प्रोज लिखा गया. स्टोरी स्टार्टेड डेवलपिंग, स्टोरीज, फिक्शन, नॉवेल. 18th सेंचुरी के पहले हमारे यहाँ नॉवेल फॉर्म नहीं था. इट डजंट मीन दैट वी वर डेफिशिएंट इन एनी वे, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो भाषा के नए रूप विकसित होते. सो 19th सेंचुरी डेवलप्ड द नॉवेल फॉर्म. बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में हरि नारायण अप्टे, in Kannada, in Tamil, in Hindi, everywhere novels, long stories, short stories started getting written. This new form of language, which was not just non-sound language, not just a reflection of language, not just writing, but it was writing for long distance consumption. Long distance consumption. जैसे चार्ल्स डिकन में लंदन में बैठ के लिखा हुआ नॉवेल अमेरिका में पढ़ा जाता था, या तो हमारे यहाँ प्रेमचंद ने एक जगह लिखी कोई कहानी बिल्कुल दूर तक केरला में या बंगाल में भी पढ़ी जाती थी. कराची में कोई लिखता था तो रंगून में वो पढ़ा जाता था. आज कोई लिखता था तो 50 साल के बाद वो पढ़ा जाता था. सो दिस इज अ लॉन्ग in terms of time span and geographical span. This print medium allowed language to travel long distance in time and in space. In the 20th century, this printing continued, but along with it, a new form of capturing language entered our life. And that form was magnetic tape. आपको पता है कि जब सिनेमा फिल्म्स शुरू हुए हमारे यहाँ 1920s में फिल्म बनने लगे, 1930s में मूवीज के साथ साथ साउंड भी आने लगा. तो साउंड की एक टेप होती थी रिकॉर्डेड, और जो चित्र होता थे, छवि, उसकी दूसरी टेप होती थी. तो चित्र भी दिखाते थे, उसके साथ साउंड भी बजाते थे. Now this magnetic tape revolutionized language once again, and rather than novel, rather than very long stories, people started going for short stories. 1940 के बाद हमारे देश में सभी भाषाओं में शॉर्ट स्टोरीज का जमाना आया. there was a Gujarati writer, a very capable writer, उनका नाम था सुरेश जोशी. वो हमेशा अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करते थे. Hemingway was a very powerful story writer in English, American story writer in English. Hemingway, Suresh Joshi used to say, Hemingway ने कहा है, short story has a lyric span but an epic tenor. उसका मतलब कि बहुत कम शब्दों में कही गई लेकिन बहुत कुछ कहने वाली ऐसी कथा होती है, उसे शॉर्ट स्टोरी कहते थे. जैसे हेमिंगवे की बात करूं मैं, तो हेमिंगवे की एक स्टोरी है द किलर्स नाम से. वो शायद दो पेजेस से ज्यादा नहीं है. ये किलर्स में एक रेस्टोरेंट में दो आदमी आते हैं, उनकी आपस में बात होती है. रेस्टोरेंट में एक आदमी है, उनके साथ उसकी बात होती है, वहां उसका मर्डर होता है और ये चले जाते हैं. लेकिन उस पूरे स्टोरी में इतने संदर्भ है
कि अगर वो हम खोलते जाए तो it can almost become a novel. A short story has a lyric span but an epic tenor. That was the philosophy that was proposed. But this became possible because of this, new form of language. The technology had impacted language, and slowly, with the recorded voice, uh, the ability of language also abilities of language, expressive abilities of language started changing. Uh, a lot of proverbs disappeared from language. कहावतें और मुहावरे वो कम होने लगे भाषाओं में. और आज तो हम इस स्थिति में आए कि ऑलमोस्ट nobody remembers any of the proverbs. कहावतें और मुहावरे तो जैसे हिंदी में था मन चंगा तो कटौती में गंगा. Now, if I utter this sentence today, perhaps hardly anybody will understand what is being said. The meaning of that was that if you have Ram in your mind, you don't have to go to Ayodhya to worship Ram. That was the meaning of that sentence. And every idiot, every villager, every speaker of the language used to understand what it is. But that has started disappearing. That started disappearing some decades back. Some 20 years ago, this digital tape also disappeared. And we have now entered a new medium of expressing ourselves, which is the medium of pure digits, electronic digits. They don't have to be stuck to a tape. They are free floating digits. And it is through these digits, through this medium, the one that I'm using now, or you're using, the mobile phone or the computer. Now, people exchange language, people send messages, they get response to their messages. There is no voice, there is writing, but that writing is not like writing on paper. जब हम कागज पे लिखते थे तो स्याही, the ink, used to get stuck to the paper forever. जैसे 15वीं सदी में लिखे हुए manuscripts, if you read them today, you can still see that ink still intact on the surface of the paper. But the digits of today are not stuck to any surface. They are without any surface. The digits in which language is transacted today does not recognize the physics of surfaces. That new language does not recognize the physics of space as well as time as we understood from the last 70,000 years till the last, just 20 years ago. In the last 20 years, everything had changed. Language had changed, and slowly it is escaping the human captivity. It is going out of human control. Language and humans are greatly alienated. वो विभक्त हो गए, वो अलग अलग जुदा हो गए. भाषा एक तरफ अपनी ही एक नए साम्राज्य में, उसके ऑटोनोमस वर्ल्ड में, और इंसान दूसरी तरफ उनके ऑटोनोमस वर्ल्ड में. This is a new reality before us. I presented this long story of language for you to consider what storytelling can do. मैं उसकी बात करता हूँ. जो कथा है, शायद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि हमारे हजारों लाखों कथा जो है, उसका एक बहुत बड़ा खजाना, समझिए, जिसे आप खजाना समझ सकते, एक कलेक्शन, ए कंसोर्शियम was the Katha Sarit Sagar. Katha Sarit Sagar is the river of stories
turning into an ocean of stories. That was the name of Katha Sarit Sagar. वो कैसे तैयार हुआ उसकी भी एक कथा है. If you don't mind, I will share that with you. तो ये हुआ था कि यानी that is the story as told in Katha Sarit Sagar. Because I tell this story, don't think that I believe in every word of it. हुआ ये था कि पार्वती जी शिव के साथ बड़े गुस्सा हो गए थे. वो कहते थे कि आप दुनिया की सभी उलझने सुलझाने के लिए घूमते रहते, लेकिन मेरे लिए कोई समय नहीं देते. तो शिव ने कहा, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं तो ये दुनिया सुंदर करने के लिए कर रहा हूं, तो आपके लिए और क्या करना है. तो पार्वती ने कहा कि आप मुझे ऐसी एक कोई कथा बताइए, टेल मी ए स्टोरी विच इज ओनली फॉर मी, एंटायरली फॉर मी. तो शिव ने कहा उसमें क्या है, मैं बताऊंगा. लेकिन पार्वती ने कहा कि और कोई सुनेगा नहीं और ये कथा और किसी को बताएगी नहीं, इट्स ओनली फॉर मी. तो ये एक कोई मकान जैसे अरण्य में बनाते हैं और वहां शिव ये कथा की शुरुआत करते हैं. लेकिन ये मकान जो बनता है अरण्य में, वो बनाने वाले लोगों को पता होता है कि ऐसा कुछ है कि पार्वती जी को एक नई कथा सुनने मिलेगी जो दूसरे किसी को नहीं. इसलिए वो दीवार को कान लगा के, अंग्रेजी में उसे ईव्स ड्रॉपिंग कहते, दे स्टार्ट डूइंग ईव्स ड्रॉपिंग. Parvati guesses that there is somebody outside trying to listen to across the wall, beyond the wall, and she throws the door open suddenly and grabs two of these persons, individuals, and then she curses them. She says, well, you have violated the sanctity of this divine story. तो इसकी सजा के रूप में अब आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा. और इतना ही नहीं, आप वहां जाके आपने जो सुना वो सब भूल जाएंगे. और इतना ही नहीं, लेकिन आप जो भी बात करेंगे वहां का कोई भी आपकी बात समझ नहीं सकेगा. वो बहुत विनती करते हैं कि माता जी माफ कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, गलती हुई वगैरह वगैरह. So Shiv says, okay, there is a relief clause. हाँ, आपको एक उपशाप भी हम देते, शाप दिया है कि अगर आप बहुत ही मेरी भक्ति करेंगे तो इसमें से फ्री हो जाएंगे. So both of these go. They are in मनुष्यलोका. They dwell in a forest. और बहुत सालों के बाद, बहुत शिव की भक्ति करने के बाद उन्हें धीरे 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 ये कथा याद आने लगती. The surge of the story is such that they want to immediately write it down so that nobody ever forgets the story again. लेकिन वहां लिखने के लिए तो कुछ होता नहीं, इसलिए वो कोई पेड़ की शाखा निकालते तोड़ के और किसी जानवर को पकड़ के उसके लहू से, with the blood of that animal, they start writing on the on the leaves that are available. After half the stories are written, they also start remembering the language which they were cursed to forget, and they start understanding the meaning of the stories. So they want to rush to the nearest king and present these stories to him and get some reward. Bakshish chahiye thi. So when they go to the king, the king says, I won't read any of these blood written stories in Paishachic language, just go back. They go back to the forest and start burning these stories. And as they consume, they put story after story in fire. They keep reading it. और वो कथा इतनी सुंदर होती है कि वो सुनने के लिए पंछी इकट्ठा होते हैं, जानवर इकट्ठा होते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं. और फिर राजा के थाली में ऐसे सूखे हुए पंछी और जानवर आने लगते. राजा फील्स वेरी वरीड कि मुझे अनाज भी खाना नहीं मिल रहा है, दुबले पतले जानवर का मीट मैं खा रहा हूं. सो ही रशेस टू द फॉरेस्ट
and sees that these people are burning the stories one after the other, hundreds and thousands stories, he stops them. और जो बच्चे खुची कहानी है उसका कथा सरित सागर बनता है. It's a lovely story of stories, origin of stories. इस स्टोरी में एक दो तीन चीजें बहुत सुंदर है. और सबसे पहले तो ये है कि स्टोरी जिस भाषा में लिखी जाती है, यानी स्टोरी की अपनी भाषा होती है, कथा की अपनी भाषा होती है. क्रिएटिविटी के, मैं कथा शब्द कह रहा हूं तो उसके लिए आप फोटोग्राफ भी ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, नृत्य ले लीजिए, गाना ले लीजिए, साहित्य ले लीजिए, इमेजिनेटिव कोई भी एक्शन, उसकी जो अपनी भाषा होती है बहुत ही कम समय सुनने वाले को, देखने वाले को समझ आती है, क्योंकि ये भाषा अपने आप में परिपूर्ण होती है. देखने वाला, सुनने वाला, उसे कोई जैसे उस राजा ने कहा था पैशाचिक भाषा, दैट इज ए प्राकृत, दैट्स अ हाफ बेक्ड लैंग्वेज. देखने वाले, सुनने वाले सोचते कि ये क्या पागलपन कर रहे, क्या इन्होंने क्या आकृति निकाली है, वो तो पेंटिंग का टेबल जैसे दिख ही नहीं रहा, पेंटिंग का क्लाउड और सूरज जैसे दिख ही नहीं रहा. देयर इज समथिंग एल्स. कविता में not normal sentences but abnormal sentences come. The autonomy of story language is something unique. वो अपने आप में एक विश्व होता है. As I said in the beginning, at the beginning of this lecture, the human brain perceives reality surrounding us with the help of language. Exactly identically, an artist perceives the reality by using a different kind of language. भले उसका ग्रामर, जैसे हिंदी, एक कोई लेखक है, कलाकार है, वो हिंदी ही, कवि है, वो हिंदी ही इस्तेमाल करता होगा, लेकिन उसकी भाषा की जो पकड़ है, उसका जो इस्तेमाल है, उसका तरीका, उसका ग्रामर अलग होता है. एंड रेयरली people understand what is being said. The language of story is not the language of non-story. The language of creators, creative minds, is not the language of ordinary minds. What is this difference, creative minds and ordinary minds? तो मुझे बहुत बार जो सोक्रेटिस ने कहा था वो याद आता है. सोक्रेटिस ने कहा था कि ordinary minds think of people, mediocre minds think of events, and creative minds think of ideas. The language of creative minds normally constructs and reconstructs concepts and ideas. Normally, that mind constructs truth rather than reality. Normal mind with 85 billion neurons constructs the image of reality. But this language of story constructs the truth of reality, the truth of the surrounding universe. मैंने शुरुआत में वास्तव ये शब्द का इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था कि सत्य, सच्चाई की बात नहीं कर रहे हैं, सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, वास्तव की बात कर रहे हैं. ऑर्डिनरी माइंड्स कंस्ट्रक्ट व्हाट इज वास्तव, क्रिएटिव माइंड्स कंस्ट्रक्ट व्हाट इज ट्रूथ ऑफ द मैटर, ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स. अब ये ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स जो होता है वो इट इज नॉट लाइक तराजू में आप 5 किलोग्राम एप्पल्स और 5 किलोग्राम का वजन रखते हैं, so it is 5 kilograms of apples. The truth of the universe is not in space or in time or in substance or in shape or in color or in texture. The truth of the universe is not the universe, not like the universe. It can be something very different, very different. एक कवि होते थे अंग्रेजी में, विलियम ब्लेक. उन्होंने कहा था टू सी द यूनिवर्स इन ए ग्रेन ऑफ सैंड. एक रेती का कण है, उसमें पूरी दुनिया देखने की जो कला है वो
क्रिएटिव माइंड के पास होती है. मेनी पीपल से, लेकिन इसका यूज क्या है, ये फालतू चीजें क्यों कर रहे हैं लोग, ये पागल है क्या? आई मीन इन ग्रीक टाइम्स, इवन इन एंशिएंट इंडिया, creative minds were often treated as mad people, madness. शेक्सपियर ने कहा था, lovers, poets and madmen, they give name to an airy nothing. जो कुछ नहीं है उसको नाम दे रहे. Language gives name to things, but creative language gives names to airy nothing. Absolutely. Their eyes, revolve from heaven to earth, earth to heaven, and they give name to an airy, they give local habitation and name to an airy nothing. एक बार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, ऑल आर्ट इज यूजलेस. और बिल्कुल सही कहा था. उनका कहने का मतलब था कि इसका ये यूज के लिए आर्ट नहीं होती है, but it has a different kind of purpose. The purpose of art is not use. The purpose of art is to give, to throw light. देखिए आप दो चीजें, एक मिरर होता है जिसमें आप देखें तो आपको आपकी छवि दिख पड़ेगी, it shows reflection. Light होता है, when the light falls on an object, it shows the object in a completely different texture. Perhaps ordinary language as such is the mirror of the universe. But creative language, creativity of any kind, is a lamp throwing light on the universe. It tells us the truth of the universe. Now, what does this truth do? अगर सभी लोग कह रहे कि इसका कोई यूज ही नहीं है, तो why should that truth of language, truth of the story, why should story be there? And there is a very powerful answer to that, and that is, a story can transcend, go beyond, अपने सीमा से बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से वो बाहर जा सकती है. हजारों सदियां या तो हजारों kilometers. It can transcend space and time in most powerful way and appeal to people and throw light on their own reality, and show them their life in a new light. जैसे अल्बर्ट कामू ने 1950 के करीबन 1950 या 51 में द प्लेग नाम की किताब लिखी थी. और जब हमारे यहाँ कोरोना आया और मैंने जब प्लेग पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये कैसा फ्रेंच राइटर था कि जिसने 70 years ago he has written this, and every word of what he has written is true for me today. जैसे कोरोना के समय फॉल्स सर्टिफिकेशन देके कुछ लोगों ने करोड़ों रुपया कमाए, कुछ लोगों ने फॉल्स वैक्सीन बना के और बेच के अरबों रुपया कमाए. अल्बर्ट कामू हैज रिटन ऑल ऑफ दैट. और कुछ लोगों ने फिर अल्बर्ट कामू के नॉवेल में ये ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. उन्होंने लिखा था कि जब प्लेग आया उस अल्जीरिया के शहर में, तो कुछ धर्मगुरु कहने लगे कि आपने तो भगवान की सुनी नहीं थी, इसलिए भगवान ने आपको ये सजा दी है, तो आप कुछ करके भगवान की क्षमा मांगिए. And then when during corona, when the prime minister of the country said to people कि आप आपके गैलरी में बालकनी में खड़े रह के थाली बजाइए, तो I remembered कि बिल्कुल ये कितना सच लिखा था. The truth of the universe is what a story contains. The language of story captures the essence of life, and because it is an essence without attributes, it gets transferred from age to age. Mahabharata, which was written nearly 300 years before Christ, and the earlier version of Mahabharata, तो उसके पहले 500-700
ऑलमोस्ट 7 सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट लिखी गई थी। आज भी हम महाभारत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें अपनी जिंदगी पे एक नया प्रकाश डाला गया, ये महसूस होता है। द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज इज अनफॉर्चुनेटली कमिंग टू एन एंड फॉर ह्यूमंस। पिछले 70,000 साल से इंसान जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो भाषाएं बहुत जल्दी मर रही है। इस समय दुनिया में 7,000 भाषा ऐसा माना जाता है और आने वाले 30 साल में कम से कम इसमें से 4,000 से ज्यादा भाषा मृतप्राय बनी होगी। The story of language is coming to an end. But the language of story is not coming to an end. The language of story is now entering a new fascinating future. अब इस समय में, जैसे मैंने कहा था कि प्रिंट टेक्नोलॉजी से डिजिटल टेप जब आने लगी, रेडियो आया, टेलीविजन आया, तो instead of novels, short stories, instead of episodes, instead of a whole film, a serial, उसकी चलती हुई currency increase for shorter. Now in the digital world, we have space to tell stories which can go across planets in coming times. They can go across languages. हम यहाँ जो बनाते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, it can be seen, heard, understood by the Portuguese speakers, the Swahili speakers, the Yoruba speakers, these Swiss speakers or Spanish speakers. The limits, physical limits of space and time are dropping off. और इसलिए हमारे सामने जो क्रिएटिव माइंड्स है, उनके सामने नए प्रकार की स्टोरी बनाने का चैलेंज है। आई नाउ कम टू द कंक्लूजन ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, और ये है कि अगर आप हिमालयन फेलोशिप में हिमालयस की दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हिमालय का वास्तव आप सामने ला सकते हैं, या तो हिमालय का ट्रूथ आप सामने ला सकते हैं। हिमालय का वास्तव है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो बाकी है वो पिघलेंगे, और दे विल कॉज हैवॉक टू द रिवराइन सिस्टम इन एंटायर एशिया, साउथ एशिया, एंड परहैप्स द ह्यूमन पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट। ये सच है, हिमालयन का ये वास्तव है। लेकिन हिमालय का ट्रूथ जो है वो कुछ अलग है, और वो ट्रूथ उसमें है कि आप जब हिमालय के किसी भी छोटे गांव में जाते हैं, बिल्कुल अजनबी को मिलते हैं, तो वो अजनबी आपको उस शाम के लिए उसके छोटे घर में सहारा देने के लिए तैयार होता है। वो घर वाला आप अजनबी को उस रात का जो भी पराठा उसके घर में होगा वो आधा देने को तैयार होता है। That great compassion, the great sympathy, the great harmony with nature is the truth of the Himalayas. और वो इस समय सभी तरह से युद्धों में फंसी हुई और सभी तरह से ग्रीड में फंसी हुई, ग्रीड यानी लालच में फंसी हुई दुनिया के लिए वो सच बहुत जरूरी है। आज हिमालय पूरे दुनिया को नया संदेश दे सकता है, लेकिन एक हाथ से हमें हिमालय की दारुण स्थिति जो है, द ट्रेजिक फ्लाइट ऑफ द हिमालयस, उसके साथ डील करना है। दैट इज थ्रू द लैंग्वेज दैट वी हैव, थ्रू कैमरा, थ्रू ब्रश, वॉट एवर वी हैव, थ्रू रिपोर्ट्स, थ्रू कॉन्वर्सेशंस, थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू स्टैटिक फोटोग्राफ्स और मूविंग फोटोग्राफ्स। लेकिन हिमालय का सच अगर आप दुनिया के सामने ले जाए तो दुनिया के लिए नई आशा पैदा हो सकती है। There is a wonderful book called the Mount, about the heights of Kilimanjaro.
Kilimanjaro is also like the Himalayas. You should take that new vision of the world through the language of story to the world. And that would be one of the purposes of your fellowship. I want to thank you for listening to my blabbering for the last so many minutes. And I want to thank you once again for allowing this space to me. Now I take your leave and fall silent. Thank you.